Sarve Bhavantu Sukhina. A very good morning to all of you guys. Guys, in this year, UPSC asked so many questions from geography. Okay, so I think we should start from geography by revising the concept in concise form. Okay, so your geography with you. I welcome you all in these classes. It is your channel Jobs Team, and here we will discuss the concise form of geography. Okay, here the context are Earth, latitude and longitude, standard time and time zones, international datelines, movement of Earth, rotation, revolution, solstice and equinox. So after discussing this concept, we move further and see the concept of other things. Okay, so here our first concept is Earth. Yes, Earth. It means Prithvi. So spherical is the shape of Earth, but it is not a perfect sphere. Why? Suppose you play the football, okay, and the football is aired. It means स्फेयर शेप में है आपका फुटबॉल और उसमें एयर्ड है, मतलब वो हवा भरा हुआ है उसमें. ओके, सपोज द लीकेज इज इन द फुटबॉल, देन वी प्लेस फ्रॉम टू साइड्स. ओके, सपोज वी प्लेस इट ऑन द सरफेस एंड देन प्लेस फ्रॉम टॉप. सो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऊपर से दब के, तो ऐसा. Similarly, the Earth is also in the same shape, that is spherical in the compressed form. Okay, it is little flattened at the poles, bulges at equator, that is oblate spheroid. Now, as we know, here there are two poles, north and south pole of Earth. So it is oblate spheroid. And the other thing is, it is geoid, that is earth shaped. Suppose someone asked what is the structure of, what is size of, what is the appearance of a sphere, earth, then the answer is geoid. Okay, now we move further and see the UPSC asked questions in 2001. What was the question? Who among the following was the first to state that Earth was spherical? इनमें से कौन व्यक्ति है जो पहले बताया था कि अर्थ स्फेरिकल था की बात है ना, इट वॉज, अर्थ वॉज, बट लेटर इट इज कंक्लूडेड दैट इट इज इन जियोड फॉर्म. ओके, द ऑप्शंस आर एरिस्टोटल, कॉपरनिकस, प्लूटमी और स्ट्रेबो. ओके, our answer is Aristotle, and we will see the explanation of this question. So here, around 350 BC, a great Aristotle declared that the earth was a sphere. 350 BC में अरिस्टोटल ने यह डिक्लेयर किया कि अर्थ क्या था, एक स्फीयर था, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही मेड अबाउट व्हिच कंस्टेलेशंस यू कुड सी इन द स्काई एज यू ट्रेवल्ड फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जब आप इक्वेटर से दूर जाते हो और जाते रहते हो, फिर स्काई में आप देखते हो कंस्टेलेशंस, इनके बिहाफ पे उन्होंने कंक्लूड किया दैट अर्थ वाज अ स्फीयर. एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 years or so, Aristotle and Eratosthenes actually measured the size of Earth. As we know, Eratosthenes is the father of geography. तो इन लोगों ने बाद में इसको बताया कि ये कितने आकार का है, साइज ऑफ अर्थ बताया. Aristotle in 340 BC first stated that the Earth was spherical in his book On the Heaven. उनकी किताब का नाम याद रखेंगे, On the Heaven. Now we will see some additional information. So here, the person who discovered that the earth is spherical in shape was Ptolemy. वो व्यक्ति जिन्होंने खोजा था ये
कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, उनका नाम क्या था? प्टोलेमी। निकोलस कोपरनिकस formulated a model of the universe that placed the sun rather than the earth as a center of universe। जबकि कोपरनिकस या निकोलस कोपरनिकस वो व्यक्ति हुए जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में पता लगाया कि सन जो है सेंटर पे है rather than द अर्थ, यानी उसके पहले मान्यता ये थी कि अर्थ जो है सेंटर पे है, बट कोपरनिकस was the first man one who declared that the sun is at the center while earth revolving around the sun। The Geographica, ancient Greek or Geographica, is an encyclopedia of geographical knowledge consisting of 17 books written in the Greek and attributed to Strabo, an educated citizen of the Roman Empire of Greek descent। जब ज्योग्राफी का जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एक 17 बुक्स का कलेक्शन है, इसमें स्ट्रेबो से संबंधित भी बातें हैं, तो ये कंफर्म होता है कि बातें क्या सही थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and we move further in the next video।